I begin to. Guruji guys, thank you so much for subscribing my channel और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा guys, do subscribe to my channel. So guys, एक और सेटअप है, एक और न्यू कार है, लाइक हर चीज़ आज नई लगी क्योंकि हेड यूनिट एक नई चीज़ मैं आज दिखाना चाहता था मैं. तो आज एक इंस्टॉलेशन है गाइस. सो राइट नाउ इट्स 4 o'clock. क्या टाइम हो रहा है अभी? एग्जैक्टली अगर बोले तो इट्स एग्जैक्टली 4 o'clock. सो अभी तक मेरी सारी वीडियोस थी कि हम 4 बजे तक आपने भी एक्सपीरियंस करा कि हाँ येस वी डू वर्क एट टिल 4 o'clock. सो लगा कि बहुत मेहनत का काम था एंड इज इट वर्थ स्पेंडिंग दैट मच टाइम टिल 4 o'clock वेटिंग. क्या रिजल्ट आया? डेफिनेटली इट वाज वर्थ द वेट. लाइक सो मैं सॉरी मैं आपका नाम पूछना भूल गया. सो व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज दक्ष. सो आज कितना हमारा खर्चा हुआ और क्या क्या हमने लगाया, आज आप कुछ बताएंगे आज क्या सेटअप हुआ? या सो बेसिकली वी ट्राई टू कीप एवरीथिंग अंडर 1 lakh, but there were some things that needed to be added, so because of that it went a little up. पर सब कुछ जो करा it was totally worth it. So we added 2 pairs of components, GL, and again there's a GL subwoofer which is performing amazing. There's a Pioneer head unit, a DD audio, 4-channel amp and a Vive amp for passing this on. बहुत सब कुछ बताया भैया ने. कुछ मैं ब्रीफ करना चाहूँगा. So we have installed the Pioneer 5450. This is a new model. अब इंस्टॉलेशन होगी तो मैं एक एक चीज़ बताऊंगा इसके बारे में. इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी, आपको सब कुछ दिखाऊंगा क्या क्या फीचर्स है. वी हैव इंस्टॉल्ड द 2 pairs of component that is being driven on the DD amplifier, 4-channel 400.4, perfect amplifier which is giving a perfect power to the components. कुछ लगा तो नहीं कि मिस हो रहा है या अंडर पावर चल रहा है, कुछ भी सेटअप है. What about the mono? What are your thoughts? Amazing. मतलब size, compact देख size. के मेरे को लग नहीं रहा था ये परफॉर्मेंस देगा. Correct. So guys, this is the size. Exactly, मैं in the video. This is the size of the amplifier. मैं अंदर दिखाऊंगा आपको कैसा है. So quickly अंदर चलते हैं, पहले कुछ installation दिखाऊंगा, फिर we'll move to a NCS and हम close करेंगे इस वीडियो. So guys, if we talk about the installation of the head unit, we are installing the Pioneer DMH-A5450 BT. So I have never shown this particular model on my channel. This is the first, you can say, video where I'm showing this particular model. So first I'll let you know the features that we get in this particular head unit. So the only difference, we got 2-3 different models being launched in the month of जून 2022. सो उनमें से एक ये मॉडल था. इसके बारे में कुछ बताऊंगा. देयर वर 3 डिफरेंट मॉडल्स. वन वाज 5450, अदर वन वाज 4450 एंड 345. एट द सेम टाइम दीज 3 प्रोडक्ट वर लॉन्च बाय द पायनियर. दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो आई एम शोइंग दिस वीडियो टू ऑल ऑफ यू गाइस. सो मैं बताना चाहूँगा कि क्या क्या फीचर हमें मिलते हैं. सो द ओनली मेन डिफरेंस बिटवीन 4450 एंड 5450 इज़ द वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो. So yes, there is a jump of 10,000 rupees. Definitely there will be a dent of 10,000 on your pocket, but you will get a feature, and I think spending on 10,000 is worth it. Like if you get a wireless Apple CarPlay and Android Auto. So recalling the feature, you get a Wi-Fi, you get a Apple CarPlay wireless, Android Auto wireless, WebLink, Bluetooth. Again, if you talk about the 4450, we don't get the option of WebLink. So इसमें एक WebLink भी है, so we get an opportunity to play videos on YouTube. बाकी आप देख सकते हैं क्या क्या फीचर्स हैं. It's visible. We got a 1080 full HD. We get a video output. Flag is there. People definitely ask for कि मेरी flag file चल पाएगी नहीं चलेगी. So yes, in this particular model, flag file will be audible. Talking about the equalizer, we get a 13-band equalizer. And talking about the MRP of this product, so in the Indian market we get approx, the cost is 33,990 is the MRP. So the retail price of this product is 30,300 rupees. So yes, a very good product, a very powerful product. Definitely it will gonna replace the 5290. The availability of the 5290 is very less nowadays. So the alternatives are 4450, 5450 and 345.
these are the 3 models. Yes, 5290 भी कभी कभार available होता है. I won't say कि it's completely discontinued, but the availability of that particular model is very very less. So if you talk about the output, we get a 50 RMS per channel. Talking about the damping, we have installed the vibro filter 1.8, the red series. Again, very good result, very economical, very budget friendly, and is range में I think no one can beat this damping. It's a complete Russian damping, imported from Russia itself. Chinese damping नहीं है कि no issues of melting. So yes, definitely one of the finest product. We are doing this work in the GLANZA. The head unit is, we are installing the head unit at the moment. We'll do a coupler to coupler fitting where we just plug in the coupler in the head unit, and we'll again the second point will be going to the head unit. So it's a very easy process to install a Pioneer head unit in any Maruti car. And right now we are planning for amplification. We are going for a high-end setup in this. C2 for the front, we'll decide for the rear what we are planning, which will be driven on the 4th channel, that is by DD audio. I'll just showcase you what we are planning right now. So right now we are planning a GL audio C2 for the front. This is again 60 RMS component for the front. This is the beautiful driver by GL audio. Crossovers are there. Twitters, I'll just showcase you the crossovers. बहुत ही अच्छे डिज़ाइन, बहुत ही fabulous result है इनका. Installing the C2. Twitters are here. So you can see the guys Twitter, very fine quality Twitters. Moving to the wiring, we are using the complete Blaupaunkt pure copper wiring. The amplification, we need to take a decision right now whether we are going for a GL audio amplifier or a DD 4 channel. If the budget is constrained, yes, we can use an amplifier under 10,000. This is one of the finest option. Yes, but if the budget is not the issue, JD 400.4 will win this particular race. Moving to the camera, we're using a Blaupaunkt DH05 camera, top of the line with the moving guidelines. We are right now, it's been 12 o'clock in the night, and we are doing the installation at the client's location. This is a 10 inches subwoofer by JL Audio. The enclosure has been pre-tuned by JL again. 10 inches subwoofer. Now we got an option in different brand, and if you're looking for a 6.5 or a 8-inch subwoofer, definitely we get a different option in DB drive. Lastly, if talking about the mono amp, guys, this is the Vibe 400.1 mono amp. Very tried and tested, reliable and compatible mono amp with the GL audio subwoofer. Costing again in 10,000, under 10,000, we get this powerful mono amp 400.1. We get a bass knob as well, very cool tiny size bass knob. So ये पूरा इसका set है. So I'll recall the entire setup. 5450 head unit, C2 in the front. We'll decide the rear component, driven on the 4-channel amp, that is DD most probably. And lastly the mono amp Vibe and the GL audio subwoofer. So एक बारी installation हो जाए, मैं आपको फिर भी एक बारी wiring की installation दिखाऊंगा कैसे हमने wiring करी है, and then I'll just showcase you the output and the final feedback by the customer. रात को कैसे काम करते हैं? It's been 2 o'clock in the night. We have the flood lights available all the time. तो अगर हमें lights की requirement होती है तो भी रात भी हो दिन भी हो, so we don't have to face any issue और कोई भी difficulties नहीं आती, because we have the flood lights available. So अब अगर हम देखें कैसे हम amplifier install करें, so we are installing the DD amplifier RL 400.4. So it's one of the finest amplifier, like this price segment में I think very powerful amp. So बात करें अगर components की, so we have installed the front components here. So if you can see the kind of work we did, the placement. So this is the beautifully designed crossover, and it's been placed. हमने इसको proper screw करा है. अगर आप देखें screws से ये अंदर tie हुआ है. So there is no point कि हमें कोई भी issues आए. Along with that, you can see the wiring. This is the pure copper Blaupaunkt wiring we have used. So no power droppage, nothing we have to worry about. So बहुत ही neatness से हमने wiring करी है. The mid drivers are being placed at the stock location, so no alteration, nothing. Just we have placed the rain guards, and along with that हमने rings लगाए हैं. So guys, finally the installation has been done for the 4-channel and the mono amp.
So अभी complete कर रहे हैं the in rear we have planned for the C1. So final decision लिया हमने कि हम आज budget was constrained. So approx मैं आपको पूरा budget बताऊंगा कितना खर्चा हो. So we are installing the C1 in rear. Along with that, we have installed the DD red line RL400.4. One again बहुत अच्छा gel up हुआ है with the C2 and C1. This is the first installation on this amp, and I have done multiple installation on the GL amp, but we have to bring the budget down. So we have installed the DD red line amplifier. Again, superb result. No distortion, nothing. The clarity was superb. Everything is great. So you can see the neatness, the wiring, the speaker wiring. We have used the Blaupaunkt speaker wiring, the pure copper wiring kits. Again, from here RC cables. If you talk about the mono amp, so guys, again the mono amp has been placed. Right now we are tuning the mono amp, so we will be placing the mono in the right side. Again, talking about the rear back speaker, so again we are installing the GL Audio C1. So now talking about the head unit, guys. This is the 5450 head unit. We get the option for wireless Apple CarPlay, Android Auto. No wire has been attached, and my phone has been connected with this device. So this is the best part. The gap of 10,000 is this is the feature which we getting in by spending this 10,000 rupees extra. सो बाकी एक बारी अनबॉक्सिंग की वीडियो भी मैं लाऊंगा चैनल पे, दिखाऊंगा कि कैसे इसका प्रोडक्ट्स में क्या क्या निकलता है बॉक्स के अंदर. एंड अलॉन्ग विद दैट इस ओवरऑल सेटअप की भी कॉस्टिंग बताऊंगा. इफ़ यू सी दी ट्विटर्स, इट हैज़ बीन प्लेस्ड इन द डोर सैश. रेस्ट एक बारी पूरा कंप्लीट हो जाए, पूरा पैक हो जाए, एक बारी NCS पे आपको मैं रिजल्ट दिखाता हूँ. With their nails done now. सो गाइज आपने देख लिया होगा रिस्पॉन्स NCS पे कैसे है, कैसे अपना रहा बूफर परफॉर्म कर रहा है, कैसे फ्लेक्स है मिरर्स का. सो आपने अब बताना कि आपको ये सेटअप कैसा लगा. गाइज इट्स वी हैव टू वाइंड द वीडियो बिकॉज इट्स 4 o'clock इन द नाइट एंड कस्टमर भी टायर्ड है, वी आर इंस्टॉलर्स आर ऑल्सो टायर्ड. सो वी हैव टू रैप दिस वीडियो. गाइज एक बारी बजट बताएंगे सर, कितना खर्चा हो गया? So the total budget was 1,10,000 rupees for today's setup. लगा कि 1 लाख, क्योंकि गाइज अंडरस्टैंड हमारा मेजॉरिटी 30 to 40% हमारा बजट वाज कंज्यूम बाय दिस हेड यूनिट. 30,300 का था. सो अगर हम 30,000 इससे निकाल लें, सो अप्रॉक्स 80,000 का ऑडियो था. क्या 80,000 रुपये इस सेटअप पे करें? क्या 80,000 रुपये वसूल थे इस सेटअप पे? बिल्कुल भैया, लाइक देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट. कहीं पे भी मतलब कोई चीज़ लैक कर रही है, जो फ्रीक्वेंसी रेंज है मतलब पूरी एक एक चीज़ क्लियरली सुनाई दे रही है. So exact frequencies are going to the mid driver, exact frequency are going to the tweeter. Yeah. DSP की I think कोई ज़रूरत नहीं है because we have installed a very good head unit. So guys, again this is a 80,000 setup where we have installed a premium component. आप बोलेंगे यार 1 लाख का सेटअप करना है, क्या ये वर्थ था? गाइज अंडरस्टैंड, हम प्रीमियम प्रोडक्ट्स लगाएंगे, डेफिनेटली यू विल गेट अ गुड रिजल्ट. देयर इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट्स इन द मार्केट, लाइक ब्रीजा भी है, बलिनो भी अवेलेबल है. इट्स योर पॉकेट कि आपको जो पॉकेट अलाउ करता है, यू हैव टू बाय दैट पर्टिकुलर कार. सो वही चीज़ है, आज हमने प्रीमियम चीज़ लगाया बिकॉज वी हैव टू गो फॉर अ प्रीमियम सेटअप. सो गाइज अगर आपको अच्छा लगा हो, वट एवर यू थिंक कि हमारी वायरिंग अच्छी थी, एनीथिंग जो भी आपको लगता है, प्लीज़ डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स क्या इस सेटअप के बारे में अच्छा लगा. Again guys, if you want to buy product from me or not, that's a secondary thing. कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी नॉलेज चाहिए अबाउट द ऑडियो सेटअप, आई एम हियर टू हेल्प यू. इसी के साथ गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक माई वीडियो, डू शेयर माई वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑटोमोबाइल गुरुजी. साइनिंग ऑफ.